Yes. Okay. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to your numeracy class. I hope you all are doing fine and you had a great day yesterday. Okay. So I hope you all enjoyed the weather as well. And where is Ayan Ahmed? Yes, Ayan Ahmed. मुझे लगता है अब तो आपके घर के बाहर बारिश हो ही गई होगी क्योंकि कल भी बारिश हुई है and every day it's a rainy day. Where is Ayan Ahmed gone? Okay, here he is. Ayan Ahmed, you want me to unmute you? Ayan Ahmed. Okay, let's wait for him. Okay, so Ayan Abbas. Yes, here you are. Okay, Ayan Abbas, I hope you have prepared yourself to recite the surah. I am unmuting you and I want every one of you to sit properly, and the girls, all the girls, I want all the girls to cover their head, and I want all the boys to, I want every one of you, I want every one of you to sit properly. Wait, Abdullah, wait. I want every one of you to sit properly, and I want every girl to cover their head. And I want all the boys to sit properly and the girls also sit properly. Okay, and Abbas, sit properly so that you can start the recitation. We are supposed to start our class with the name of Almighty Allah, who has created everything. Okay, very good. And as Abbas is also wearing a topi, a cap. Okay, very good. Yes, Ayan Abbas, sit properly. Yes, Ayan Abbas, you can start now. There is noise. Surah Al-Kawthar, inna a'tainaka al-Kawthar. Shaitan Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kawthar, inna a'tainaka al-Kawthar. Wasalli fiha wanhar. Inna shaniyaka al-Kawthar. Inna shaniyaka. Inna shaniyaka al-Abtar. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Excellent. Thank you so much, Ayan Abbas. Thank you so much. Very good, Ayan Abbas. Okay. So, as it's your numeracy class, first of all, I want a small review of what we were learning in our numeracy class. In the previous days, in the previous weeks, हमने क्या पढ़ा है? कुछ दिन पहले क्या पढ़ा और कुछ previous weeks में हमने पढ़ा क्या? Can anyone give me a small review? I want every one of you to participate. Okay, Ayan Ahmed ji. Abraham, I'll unmute you after Ayan, okay? Yes, Ayan Ahmed. What did you started learning in the classes of numeracy? Adding decimals and subtracting decimals. Excellent, very good. And what did we learn before that? Abraham, आपने adding decimal और subtracting decimal से पहले क्या पढ़ा? टीचर हम लोगों ने पढ़ा था ग्राम्स और किलोग्राम्स and liters to milliliters. Excellent, very good, very good. Okay, so the next question is I want to know that how many milliliters are there in a liter? Who wants to answer this question? Okay, Abdullah, yes, unmute करें बेटे. Miss, Yes. हम लोग डेसिमल पढ़ रहे थे. उससे पहले हमने कुछ पढ़ा था या सिर्फ डेसिमल ही पढ़ रहे हैं हम शुरू से? सीनियर से पहले भी पढ़ा था. क्या पढ़ा था? लीटर एंड मिलीलीटर. And what else? Grams. Excellent, very good. So the next question is, how many milliliters are there in a liter? In 1 liter, how many milliliters are there? Who is going to answer this question? Ayan Abbas, you want to answer? Ayan Abbas, you want to answer? Why? Don't you know how many milliliters are there in a liter? Don't you know? Ayan Abbas, you don't know? Okay, let's see. Okay, Heba is going to tell us. Yes, Heba. Heba, how many milliliters are there?
Excellent, very good. Okay, how many? Very good, Hiba. Thank you so much. Ayan Abbas, did you get to know that there are 1,000 small milliliters in a liter? Did you got that? I gave an example of a water bottle. Remember? Remember, Ayan Abbas? Okay, very good. Okay, now tell me how many kilograms are there in 1 gram? Oh, sorry, how many grams are there in 1 kilogram? Who's going to answer this question? No, not Hiba again. Hiba, you have already answered. Yes, Abdul Bari. Abdul Bari. Abdul Bari सर मुझे बताइए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? Miss, Yes. 1,000. Excellent. Okay, Abraham. There's a question, Abraham. Abraham, tell me that when we go from liters to milliliters, which sign do we use? Which operation do we use? Teacher, division. अब्राहम बेटे थोड़े स्लो बोलेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. Teacher, division. बेटे when we go from liters to milliliters, liters is a big term and milliliters is a small term. जब हम liters excellent, very good. Okay, the next question is when we go from milliliters to liters, Zainab will answer that which sign do we use? From milliliters to liters जब हम जाते हैं, which sign do we use? Multiply. Division. Very good. I thought that you people are confused. Okay, so same goes for kilograms and grams. When we go from grams to kilograms, grams is the small term, kilograms is the big term. मैंने क्या बताया था? Grams are the smaller parts in 1 kilogram. 1 किलोग्राम में जो small parts हैं, ठीक है, तो वो क्या है? वो grams हैं. We call them grams, right? So how many grams are there in 1 kilogram? Who's going to answer this question? Oh, sorry. When we go from grams to kilograms, which sign do we use? Who's going to answer this question? Grams say, okay. Yes, Alisha. Alisha, बताइए हमें कि when we go from grams to kilograms, we use multiplication sign or the division sign? Multiplication sign. No, the division sign. When we go from small to big, small क्या है? Gram. और big क्या है? Kilogram. जब हम small to big में जा रहे हैं, we use the division sign. Okay. And when we come from big to small, ठीक है? Okay, let me explain you one thing. इस तरह करते हैं. मैं ये 2 chits बनाती हूँ. ठीक है? Wait, give me a second. I have 2 chits. I think you people are confused. Is there any confusion? Is there any confusion? Then why aren't you people answering? You people solved the questions as well. Then why are you people so confused? Ehsan, I have a question to you, bete. Okay, give me a second. Okay, can you see these chits? Can you see it's written big over here and it's written small over here? ठीक है. Now we have 2 small terms. ठीक है, हमारे पास 2 small terms क्या है? That is grams and milliliters, right? हमारे पास जो small terms हैं वो क्या है? Grams and milliliters. 2 small terms हैं और 2 big terms हैं जिसमें हमारे पास क्या है? Kilograms and liters, right? हमारी 2 big terms हैं. Big terms क्या है? Liters और kilograms. और small term क्या है? Grams and milliliters. ठीक है? Is it clear to everyone? अब obviously हम कभी ऐसा हो सकता है कि हम small to big भी जा सकते हैं और हम big to small भी जा सकते हैं, right? तो this is what happens कि जब हम
किलोग्राम से ग्राम्स में जाएंगे, ठीक है. व्हेन वी विल गो फ्रॉम बिग टू स्मॉल वी विल मल्टीप्लाई, एंड व्हेन वी विल गो फ्रॉम स्मॉल टू बिग वी विल divide. ठीक है. Same goes for liters and milliliters. Liters is the big term. See, you can see I have written kilograms and liters in the big term. ठीक है. And in the chit that I have written small, I have written grams and milliliters. Is it clear to everyone? Is it clear? Ehsan, you have a question? Ehsan, you have a question? Ehsan, आपको कुछ पूछना है? जी बोले ehsan. मिस मैं ये कह रहा था कि आप जो मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं उसका जरा वापसी से क्वेश्चन आप रिपीट करें, मैं आपको आंसर दे दूंगा. अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जब हम स्मॉल टू बिग, व्हेन वी गो फ्रॉम स्मॉल टू बिग, लाइक व्हेन वी गो फ्रॉम kilograms to kilograms, so which sign do we use? जब हम ग्राम से kilograms में, excellent, very good. See, I hope everyone understood this. Is it clear to everyone? Give me a thumbs up through Zoom. Give me a thumbs up through Zoom. Okay, Zainab, Asad, very good. Alisha, Hassan, Maham, very good. Mahir, Ayan, Ashraf, Abdul Bari, Abraham, very good, very good. Ehsan, okay, very good. Yes, Talbiya, excellent. Ayan, very good. Malahim, very good. Ayan Abbas and Rubaisha, is there any confusion, beta? Okay, Ayan Abbas got it. Okay, Rubaisha, you can give me a thumbs up like this even if you are confused using Zoom, no problem. Okay, thank you. Okay, now what I want everyone is to open this worksheet. Wait, I'm showing it to you on the screen. Open this worksheet in your worksheet pack. Everyone is having that worksheet pack, right? Worksheet set. Open this worksheet. Hurry up. Hurry up because only 10 minutes are left to end the class. Open this worksheet. Open this worksheet. Okay, write your name, your date. Write your name and your date. Yes, very good, Zainab. Show me the worksheet. Show me the worksheet. I want to see the worksheet. All of you show me the worksheet. Zainab, the way Zainab was showing me the worksheet now, I want to see the worksheet. Show me the worksheet. Okay, Hassan, very good. Okay, Talbiha, Maham, Ayan, very good. I saw the worksheet. Rest of the students, where are the worksheets? Where is the worksheet? Open it. Ehsan, open it. Very good, Abdul Bari. Okay, Alisha, excellent. Abraham, show me the worksheet, bete. Okay, good. Very good. Okay, so here is the worksheet. And I'm explaining it to you. If the worksheet will not be completed and during the class now, you can complete it after the class. Okay, so you can complete this worksheet after the class. Even I'll put the homework on the software, okay? I want every one of you to complete that homework. So I hope everyone has opened the worksheet. Thumbs up through Zoom. Thumbs up through Zoom. Okay, okay. Very good, very good, very good, very good, very good. Very good, very good. Very good. Very good. Rehan, आपने worksheet खोल ली बेटे? Yes. Okay. So what are they saying in the worksheet? Okay, here is the worksheet. So what are they saying in the worksheet? वो आपसे ये कह रहे हैं, we measure weight in grams and kilograms. हम measure जो weight measure करते हैं solid का, वो किस तरह करते हैं? grams में या kilograms में, right? जो हम solid चीज होती है, let's suppose I have a mug over here. ठीक है, there is this mug. अब हम इसका जो weight करेंगे
वो ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में करेंगे, ठीक है। तो या तो इसका वेट अगर 1000 किलोग्राम्स लाइक 1 किलोग्राम नहीं होगा तो दैट मीन्स इट माइट बी 100 ग्राम्स और 200 ग्राम्स और लाइक दिस, ठीक है। so it will be written on the measuring tools. measuring tools बहुत सारे measuring tools आते हैं, जैसे आपने I will be showing you some measuring tools in the next class, okay, so don't worry about that. Okay, so now they gave an example over here. 1000 grams is equals to 1 kilogram, ठीक है। Okay, now in they are saying read the scale below, ठीक है, read the scales below. Okay, what you are supposed to do is आपको एक यहाँ पे क्लॉक टाइप जो है एक स्केल दिया हुआ है, इट्स नॉट अ क्लॉक, इट्स अ स्केल, ठीक है, एक मेजरिंग स्केल है, ठीक है। द वे मेजरिंग टेप होता है ना, उसी तरह ये मेजरिंग स्केल है। इसमें उन्होंने एरोज बनाए हुए हैं। आई होप एवरीवन कैन सी इट वेरी क्लियरली, लेट मी गेट इट जूम, ठीक है। सो व्हाट आर दे सेइंग इज कि आपको इस स्केल को रीड करना है और नीचे उन्होंने आपको यूनिट दिया हुआ है, दे हैव गिवन यू अ यूनिट ओवर हियर, ठीक है। आपको वो देखना है कि ये जो स्केल है ये कहाँ कितने मेजर कर रहा है, राइट। तो दैट मीन्स कि ये जो मेजरिंग स्केल है ये कंप्लीट किलोग्राम मेजर नहीं कर सकते हम इसमें, ठीक है, बिकॉज देर आर ओनली 700 तक ही इसकी जो है वो एक लेंथ है, इसका एक वो है क्या कहते हैं, इसका एक क्राइटेरिया है, सिर्फ एक इतना ये 700 से बिलो या 700 तक की ही चीज ग्राम्स में मेजर कर सकता है, ठीक है। सो व्हाट इट इज पॉइंटिंग ऑन, इट्स पॉइंटिंग ऑन 100, राइट। सो यू विल राइट 100 ग्राम, आप यहाँ लिख दोगे 100 ग्राम, सही है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या है, ग्राम, ठीक है, और ये मेजरमेंट में यहाँ पे किसको पॉइंट कर रहा है, 100 पे, राइट। तो क्या हो गया 100 grams. You can write down 100 grams over here. Okay. Do it with me. Do it with me. Ayan Ashraf, where is your worksheet? Oh, sorry. Ayan Abbas, आपकी worksheet कहाँ है बेटे? Ayan Abbas, show me the worksheet. Worksheet दिखाए बेटे मुझे। तो बेटे बैठिए, sit down and then solve the worksheet. Okay, so let's move forward. ओके, ये आपको समझ में आ गया कि जहां पे वो जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वी आर सपोज टू राइट दैट वेट, ठीक है, एंड द यूनिट इज रिटन ओवर हियर, राइट। ओके, अयान अशरफ, यस, व्हाट हैपेंड बेटे, अनम्यूट योरसेल्फ। अयान अशरफ बोलिए बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ अयान। 100 G. Excellent. It's not, you will say grams, 100 grams, ठीक है। अच्छा, 100 grams. Okay, excellent, very good. Yes, असद अहमद, unmute yourself बेटा। असद अहमद unmute करे बेटे, बोलिए। असद अहमद unmute yourself बेटा, बोले बेटा, बोले। असद बोलिए बेटा। असद बेटा बोलिए। मिस रुकिए 1 मिनट। बेटे मैं रुकी हुई हूँ, आप जल्दी से बोलिए। बेटे हरी आप। मिस जी, क्योंकि जो आप रीड द स्केल्स ऑफ बिलो पढ़ा रही है ना, ये मैंने करा हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम, आप उसको समझ लीजिए बिकॉज इट विल बी कमिंग इन योर फाइनल पेपर्स, ओके। Okay, so I have answered your questions. Okay, now in B they are saying कि यहाँ पे 4 पे वो point कर रहा है and the unit is kg. So what will be your answer? 4 kgs, right? 4 kilogram. Let's move to the next one that says C is 250 grams, ठीक है? It's saying 250 grams, right? Okay, so in the next one it says, okay, so the next one it says that
Okay, here it is. It says D. It says 6 kgs. ठीक है, 6 kgs. 6 kgs contains 6,000 grams. ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? Okay, now in E it says 60 and then it is over here and it is written 80 यहाँ पे. So that means it has 70 grams. 70 grams. ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पे आपको किस तरह दे रहा है, 0 and it is empty over here, right? So that means कि यहाँ 10 है, then it's 20, 30, 40, 50, 60 and it will be 70. It's saying, it's pointing on 70 grams, right? Okay, so in F it's saying that this is 0, right? We consider it, it's written 0. That means जब 0 आ गया तो फिर यहाँ 1 2 3 4 5 और फिर मतलब 0.1 0.2 0.3 0.2 4.5, right? Then it's 0.2 5 0.6 0.7 0.8 0.9 and then it will complete 1. Then again जो ये line आ रही है, it means it's 1.5. Then it's 2. राइट जब हम 5 और 5 को ऐड करते हैं तो 10 हो जाता है ना. तो इन दिस सेम वे वो क्या कर रहा है, जब वो 0.5 और 0.5 को ऐड कर रहा है तो वो पूरा नंबर एक कंप्लीट हो रहा है. मतलब यहाँ नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है. जब उसने फिर 1.5 और 1.5 को ऐड किया तो व्हाट हैपेंड इज उसके 2 बन गए. ठीक है, अब क्या हुआ कि क्या नाम है, फिर उसने क्या किया, 2 में 0.5 और 0.5 ऐड किया तो 3 बन गए. जब उसने फिर 3 में 0.5 और 0.5 ऐड किया तो 4 बन गए. नाउ व्हाट विल बी द आंसर, यहाँ 4 है और यहाँ 0.5 है, तो व्हाट विल इट बिकम, 4.5 kgs. 4.5 kgs. I hope it's clear to everyone. 4.5 kgs, right? And the second question is your homework. Circle the heaviest item in each group. You know what are the heaviest items in this picture, right? So this is your homework. You can complete it. And if you have any questions, you can ask me now, because after 2 minutes your class is about to end. Raise your hand through Zoom. I'll be answering your questions only then. आप जो है Zoom के through hand raise करोगे तो I'll answer all the questions. Hurry up. Yes, Ayan Ashraf. अनम्यूट करे बेटे जी, बोले. Miss, I have done. Okay, did you understood? Okay, yes Abdullah. जी अब्दुल्ला. इसके बाद कौन सी क्लास है? इसके बाद आई गेस आपकी नाजरा की क्लास है. आई डोंट रिमेम्बर, आप देख लीजिएगा. यस अब्राहम, बोलिए बेटा. अब्राहम बेटे अनम्यूट योरसेल्फ, हरी अप जी, बोलें बेटा. अब्राहम. टीचर ये क्या the final test exam होंगे? Yes, you will be having a final examination. In that you will be having these questions. Okay? I was done it already. Okay बेटे, okay, very good. Okay, yes ईशल यासिर, बोलिए बेटे. जो आपने वर्कशीट कराई है वो मैंने कर ली है. Okay, very good Vishal. Yes, who else? Alisha. Yes Alisha, बोले बेटा. Alisha बोलो. Miss, you give us homework na? Can we color? Yeah, you can color it. Yes, sure, you can color it. Very good. Okay, Zainab, very good. Okay, very good Zainab. Zainab, very good. Okay, Ayan Ahmed जी बेटे बोले. अयान अहमद बोलो बेटे. जी जी. मैंने ये वर्कशीट करी हुई है और मैं पूछा कि एग्जाम कब होंगे. बेटे you will be getting it to know very soon. आपको अभी बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम्स कब स्टार्ट होने वाले हैं. ओके. Okay, I hope everyone understood what we learned today. And yes, Abdullah, बोलिए बेटा. मिस, हमारे एग्जाम घर पे होंगे या स्कूल पे होंगे? घर पे होंगे. जी रुबाइशा. यस रुबाइशा, बोलिए. रुबाइशा बोलो बेटे. जी रुबाइशा, unmute yourself बेटा, hurry up. It's 3-1.
I have to end the class. Okay, I hope you all enjoyed today's class and you all enjoyed learning and revising kilograms and grams and liters and milliliters. Okay, Abdul Bari, have a question. Yes, Abdul Bari, hurry up. This is the last question that I'm taking today. Yes, yes, Abdul Bari. मिस ये जो है कि मैं आपने जो अभी समझाया था क्लॉक वाला, इसमें जो मेरा लास्ट वाला जो है ना वो मेरा रह गया, उस पे पता नहीं क्या है। उस पे पता नहीं क्या नहीं है बेटा। अच्छा, एक काम करते हैं, आप उस वर्कशीट डू वन थिंग, आप उसको ना कंप्लीट कर लो वर्कशीट को, ठीक है? आप मैं ना कल दोबारा एक दफा रिव्यू दूंगी तो आप उसमें उसको कंप्लीट कर लेना। ओके 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 ओके, इज इट फाइन? बाकी सारे समझ में आ गए अब्दुल बारी को? यस अच्छा, सिर्फ एफ रह गया है ना आपका? यस मिस यस। We'll do it tomorrow. जिनका रह गया है ना बेटे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हम उसको कल दोबारा रिवाइज कर लेंगे। ओके हम उसे कल दोबारा रिवाइज करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, हैव अ गुड डे। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। Go and join your another class.